How did it all begin? Let's do a small, quick recap. I'm saying that we started a Lean Six Sigma project. So maybe the step number one was that we identified some problem or opportunity of improvement. We identified stakeholders that are impacted by this. We gathered the voice from these stakeholders. We converted the voice into CTQs. Now once we have our CTQ, we started creating our project charter. In which we did our typical business case and problem statement, goal statement, etc., etc. Once your charter was done, you sent it to sponsor for approval. Once the charter was approved, define phase ended, you stepped into measure phase, wherein you first created your CTQ. Identify the CTQ matrix or the CTQ characteristic. You built your data collection plan. You collected your data for your project file. Then you set out to validate your data using the measurement system analysis, meaning agar data was discrete, you did your AAA. If your data was continuous, if your data was continuous, you did your gauge RNR or test retest, whatever was applicable. If data was okay, only if data was okay to proceed further, you calculated your as is process capability. Then you stepped into the analyze phase of Six Sigma. Step one, you identified your potential factors. You would have used brainstorming,
study of existing data strata, studied the inputs and resources which could have come about from a SciPOC or the flowchart. You could have made the FMEA, etc., etc. The first thing that we did as part of the analyze phase was you identified the potential X's, you built the data collection plan for your factors. Once your data collection plan was ready, you collected the data and you validated your factors for their impact using the statistical tests of hypothesis. Outcome. The outcome was that when I'm entering the improve phase of Six Sigma, I have a list of impacting factors that have been validated using my hypothesis test. Yes, everyone? This is where we will start. यही है हमारा start point. The improve phase of Six Sigma is where the action will now begin. Step one, if you have too many factors, one advisable way could be screening of these factors. Assume a project, let's say I'm doing a project on handling time, और मुझे ऐसा दिखा that I have 20, 30, 35 factors which are impacting my project Y. I can't fix the world in one project. So with my limited set of resources, I would rather want to prioritize and see which factors have more impact, which factor have less impact. And various other prioritization methods could be put to use. So step number one for improve will be to prioritize or screen the potential factors. And this screening or prioritization can be done either mathematically or can be done basis certain attributes. Logic clear है? Manas, Atul, Bhanu? Yes. Yes. Manas, you good? Yes, I'm good. So the first method I'm saying around prioritization could be mathematical, which means now if you recall your hypothesis test, while doing the hypothesis test, we've received values like R square. We've received values like R or Pearson's correlation coefficient. We have received values like chi-square. We could have received coefficients in certain tests.
these could be our prioritization method that we could use in our project. Let's look at this example here. Someone was doing a project and he found out these 6 factors. This is a project on collections. So he found out time on system, tenor, experience, typing speed, location, and day of the week as contributing factors. When they had conducted the test, they had received the R-square value. So if you look at the R-square values here, the toss has 72% as R-square, tenor has 54%, day of the week has 98%. If you recall, R-square, also referred to as the coefficient of determination, essentially explains the percentage impact of X on Y. So दिखाई दे रहा है clearly that day of the week has 98% impact. Tenor has 54% impact. Time on system has 72% impact. So that should be your prioritization method also. इसका मतलब है day of the week becomes very important. Time on system becomes the second most important. Tenor becomes the third most important. Experience becomes least important because it only has 12%. Bhanu, Manas, Atul, with me? Yes, sir. Yes. वैसे ही अगर आपने chi-square का टेस्ट किया है, assume that you are doing a discrete data का project और आपके सारे factors में आपको validate करने के लिए you use chi-squares. So higher the chi-square, more is the impact of that factor. तो chi-square के basis पे आप prioritize कर सकते हैं. अगर आपने R value इस्तेमाल किया है, अगर आपने सबके correlation test run किए थे, hypothetical situation है, ideally नहीं करना चाहिए. अगर आपने correlation test conduct किया है, तो R value के basis पे हम prioritize कर सकते हैं. If you remember, R or your Pearson's correlation coefficient was a value that ran from -1 to +1 through 0. Correct, everyone? इसका मतलब है कि if you look at the example here, I have a factor which is x3 here with a contribution of about 0.9 negative. So this becomes my top most important factor, followed by x1 and x2, which both have 0.72, irrespective of the direction of the relationship. Factor number x1 and x2 become the second most important factor. Thought clear, Bhanu, Atul? Yes, Brahman. तो सबसे आसान तरीका प्रायोरिटाइजेशन का will always be mathematical through R squares and chi-squares and R values and coefficients. If you are doing something like, let's say, binary logistic regression. So if you are doing a binary logistic regression, you are getting these values here. You see the coefficients, all of you? कोफिशिएंट के बेसिस पे भी आप वैसे ही डिटरमिन कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. दैट कुड हेल्प यू अंडरस्टैंड किसका इंपैक्ट ज्यादा है किसका इंपैक्ट कम है. So I'll go back to my writing page and I'll say basis the R square, the R value, the chi-square value, the coefficient, these could be used to prioritize amongst the available factors. We good? Thought clear है बिल्कुल? Another way to prioritize could be basis certain themes like, cost, controllability, time, मुझे ऐसा लगता है that if I have two factors, one factor will have a lot of cost associated with making the changes. Let's say one of the machines is malfunctioning. And in a manufacturing environment, that machine is a very high cost product.
तो हो सकता है my leadership, my top management is not willing to make that kind of expense for the project at hand. So we may want to drop that factor owing to the high cost of making the changes. While something which is less costlier, let's say process knowledge, I am in the healthcare domain and I find that my productivity is down because of people capability issue. उनका process knowledge ही खराब है. मुझे दिखता है प्रोसेस नॉलेज की ट्रेनिंग देने के लिए तो मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं उनको इस्तेमाल करना है. तो मुझे कोई हेडेक नहीं, इट डज नॉट ऐड टू माय कॉस्ट. कॉस्ट thus could become an important factor for you to prioritize. Controllability. मैं जब प्रोजेक्ट करता हूं, मेरी लाइफ का एक बहुत central theme of improvement is always controllability. There are things that are within my control. There are things which are not within my control. हम external projects बहुत करते हैं. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारने के लिए मुझे बाहर किसी की हेल्प नहीं चाहिए. तो वो फैक्टर मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा. ऐसी चीजें जिस पे मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऐसे फैक्टर्स मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट होंगे. Yes, no, black, white. We are able to relate to the story. Yes, sir. If you look at your newer template for Six Sigma, in the improve phase, I have added a prioritization grid also. You can download this from your AIGPL IDs. I've added that to your download section. Just give me a second. Look at this. Time, cost, controllability, ease of change. In our own personal lives, professional lives, there are things that will not need a lot of stakeholder buy-in. I was doing a project for consulting work for Apollo Munich Health Insurance. Sorry, मुझे ये video edit करना पड़ेगा. For an insurance firm, and we found that couple of vice presidents were very, very unhappy that an outsider will come in and do the project. उनका वो resistance मुझे initial conversation में ही दिख रहा था. While there were 3-4 vice presidents who were very welcoming, मुझे clearly दिखाई दे गया कि उस इलाके में change easy होगा implement करना जहां vice presidents हमारे साथ हैं. ऐसे इलाके में जहां VPs हमारे साथ नहीं हैं, वहां हमको बहुत resistance मिलने वाली है. तो I dropped the ball. Are you with me, Banu, Atul? Yes. Yes, sir. कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो? भानु, where do you work? CSET square. CSET score. Okay. And Atul, where do you work? I work in teleperformance. You work in? Teleperformance. Okay. So assume करो कि और किस operations में हो, quality में हो? Quality. Say that again, please. I'm in quality. Okay. So assume करिए आपने quality का project start किया है, जिसमें improvement opportunities में कुछ ऐसे factors हैं जो आपकी team ही implement कर सकती है. तो मेरे लिए easy है ना वो change करना. That is what I'm saying कि ease of change के basis पे मैं prioritize करूँ. Process knowledge improvement. Correct. Another factor that I consider is resource availability. कितनी बार ऐसा है that I am looking at automation solutions, but my automation team is not available. I would not want to improve something जहाँ पे resource की availability is a concern area. Impact on customer experience, इसको leader बहुत weightage देता है. Maybe this could be the topmost criteria when we are screening our factors.
another criteria could be applicability to other areas. मुझे ऐसा दिख रहा है that while I am only doing a project on quality, अगर process knowledge improve करूंगा तो production भी बढ़ेगा. So ऐसा factor जो और इलाकों को भी assist कर सकता है could be a great thing for us to do a project on. You guys with me, everyone? और फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने एक फैक्टर प्रायोरिटाइजेशन नंबर बना लिया. नथिंग बट टाइम कॉस्ट कंट्रोल इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया. या आपको मुसीबत बुलानी है, यू कैन डू इट वन बाय वन. आई कैन डू अ 2x2 मैट्रिक्स फॉर कंट्रोल इम्पैक्ट. आई कैन डू अ 2x2 मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट इम्पैक्ट. आई कैन डू अ 2x2 मैट्रिक्स ऑफ टाइम इम्पैक्ट. If you see the example that is on your screen right now, हमने ये कहा कि प्रोसेस नॉलेज को इम्प्रूव करने में 4 वीक से कम लगेगा, तो हमने उसकी रेटिंग 3 कर दी है. यू सी दिस? Yes. Yes. लेकिन अगर मुझे स्किल एक्सपीरियंस का जो आज मेरे कंपनी में हालत है उसको मुझे चेंज करना है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है. अट्रिशन का वेट करूंगा, नए बंदे हायर करूंगा जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हों, उसका कॉस्ट भी ज्यादा हाई रहेगा. प्रोसेस नॉलेज की ट्रेनिंग करने में हमको खर्चा बहुत कम होने वाला है. प्रोसेस नॉलेज मेरी टीम ही ट्रेन करेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कंट्रोलेबल है. एक्सपीरियंस नॉन कंट्रोलेबल है, बिकॉज इसमें टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है, रिक्रूटमेंट टीम का इन्वॉल्वमेंट है, ऑल ऑफ दैट. Hence, I'm calling it easy to change. Experience difficult to change because there will be a lot of cost-related decisions also. Resource available है, हाँ बोले हम मेरी टीम करेगी, इसलिए कोई मेरे पास रिसोर्स है. एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए बोले रिक्रूटर सफिशिएंट नंबर में है. दोनों चीजों से सीसैट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. प्रोसेस नॉलेज बहुत अन्य चीजों को भी इंपैक्ट करेगा, लाइक आई वाज टॉकिंग प्रोडक्टिविटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, सब चीजों पे इंपैक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी. सो आई गिवन इट अ रेटिंग ऑफ 3. नाउ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे लिए ये एक फैक्टर प्रायोरिटाइजेशन नंबर स्कोर आ गया, which here in this example is about a 972. Fair thought, everyone? और ये सबको मल्टीप्लाई करना है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वन कॉलम 1 से लेकर पूरा एंड करेक्ट, हाँ करेक्ट. 972 आ जाएगा. अब होल टाइम का भी वैसे ही बनाऊंगा, एसीडब्ल्यू का भी वैसे ही बनाऊंगा. लेगेसी जो जो आपके फैक्टर्स निकल के आए थे सबको सबको इसी रूप से आपको ले जाना पड़ेगा. ठीक है. और आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन में भी. व्हाट डिड आई डू? कंट्रोल Z, हाँ. और राइट एट द स्टार्ट ऑफ योर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट थीम्स आते हैं और उसमें अगर आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, तो आप ऐसा ही सिमिलर मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो. सो लेट्स से आपके पास 10 प्रोजेक्ट आइडियाज आ गए, आपके आइडिएशन प्लेटफॉर्म ने आपको 10, 20, 25 आइडिया दे दिए. नाउ यू हैव टू चूज वन प्रोजेक्ट आइडिया. वो सेम टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो टू प्रायोरिटाइज कौन सा प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में करेंगे. यू गाइस विथ मी, एवरीवन? यस. Yes. क्या क्या फैक्टर्स थे? कॉस्ट, कंट्रोलेबिलिटी, टाइम, ईज ऑफ चेंज, मे बी कस्टमर एक्सपीरियंस को मैं सबसे ऊपर ही लिख देता हूं. कस्टमर एक्सपीरियंस, and applicability to other areas.
एसेट्रा एसेट्रा। तो पहला काम इम्प्रूव फेज में अगर आपके पास बहुत सारे एक्सेस आ गए तो वुड बी टू प्रायोरिटाइज। वंस योर प्रायोरिटाइजेशन इज डन, अब आपको पता है कि आपको कौन से फैक्टर पे काम करना है। माय एडवाइस, नॉट मैंडेटरी, my advice and how the industry wants to do it is through a very deep dive of your factor. Start doing your 5 why for the factors that look like impacting your project why. Let me see if I have some example. Recently किसी ने एक efficiency का project किया है. Where is my ISA folder? ISA projects, okay. Efficiency. So someone who's trying to work, there's an insurance firm. The screen is not visible. Stop, bas another minute. So someone was doing a project on improvement of efficiency. Efficiency उनके अनुसार था आपकी टीम को एक टारगेट मिला है. Let's say every person in the team is required to do 100 documents processing per day. Vis-a-vis that 100, how many have you done is the percentage. So मुझे टारगेट था 100 का, मैंने 98 किया, तो 98 upon 100 is my efficiency score. And they found that these, the ones mentioned in green, are the ones that are impacting the project Y. If the documents received are not in good order, it impacted my efficiency. IT downtime impacts my efficiency. Process knowledge impacts my efficiency. System design has issues. There is too much unnecessary motion उसकी वजह से, stress target की वजह से, will issue की वजह से. So these are the factors that impact my project Y. मुझे analyze phase ने statistical validation से ये बता दिया. Now we started to question why were the documents not in good order? Documents were not in good order because of, let's say, human error. Documents were not in good order because good order का definition ही तैयार नहीं हुआ है. जिसको जैसा मन करता है वैसा डॉक्यूमेंट बना देता है. किसी किस्म का स्कैनिंग इशू था, प्रोसेस का डिजाइन का इशू है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर्ड है, ऑब्सोलीट है इंफॉर्मेशन, लेजिबिलिटी इश्यूज हैं. सो दिस वाज योर फैक्टर. ये फैक्टर के फैक्टर हैं. अब हम आपसे पूछ रहे हैं ह्यूमन एरर क्यों हुआ. The human error could have happened because of will issue, could have happened because of skill issue, because of carelessness. हिंदुस्तानी मेथड जुगाड़ से सब कुछ चल रहा है इसलिए एरर हो गया. टाइम कम था इसलिए एरर हो गया. पर्सन बहुत थका हुआ था. सो इसेंशियली आप कर क्या रहे हो, आप 5 why वाले मोड में चले गए. सो जो भी आपके फैक्टर्स आए, बिल्ड 5 why for all factors. Let me reiterate, it is not mandatory. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट रॉन्ग है. It is an optional step. So you should dig deeper and get to the bottom of the issue. So आप 5 why मेथड इस्तेमाल करके रूट कॉजेज ढूंढो और उन रूट कॉजेज का को फिक्स करने के एक्शन प्लान्स बिल्ड करो. अब आपको ये पता चल गया दैट मुझे पता है प्रोसेस नॉलेज इज द प्रॉब्लम. एवरीवन, मानस, प्रोसेस नॉलेज लोगों का खराब क्यों होता है? कैन यू गिव मी अ रीजन?
सर कभी लो ट्रेनिंग होता है, उनका जो डिफाइंड ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, या जो ट्रेनर है जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी अनस्किल्ड है ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर नॉट और या फॉलोड, फिर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स से अवेलेबल नहीं है, तो टीम मेंबर्स ट्रेनर अपने हिसाब से ट्रेनिंग अनस्किल्ड, देते हैं। अनस्किल्ड, ट्रेनिंग कंटेंट not defined. Atul, why do you think the trainer is unskilled? ऐसा क्यों होगा? because they are not reading uh, SOP. They are not able to understand what is there in the module, or there is some issue. Even process knowledge gap is also by the agent also, not the only trainer is अभी हम कह रहे हैं involved कि every time. अभी एक रीजन हम ढूंढ रहे हैं प्रोसेस नॉलेज क्यों खराब था, तो उसका एक रीजन निकल के आया प्रोसेस नॉलेज खराब होने का कि जो ट्रेनिंग दी गई वो उसने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, जो ट्रेनर था वो खुद ही अनस्किल्ड था। नाउ आई एम आस्किंग यू, अनस्किल्ड ट्रेनर क्यों है? Unskilled trainer, yes, because they are not understanding the SOP. They are not because SOP not followed. ठीक, What is एनीथिंग it? एल्स व्हाई द ट्रेनर इज Whatever. अनस्किल्ड? Yeah, this is comprehension issue और because क्या, they are reading something else and understanding something else. और क्या रीजन हो A सकता है? hiring issue. The trainer ये had was not capable. पॉसिबल कि हमने हिंदुस्तानी सिस्टम में आईजेपी जो था ट्रेनर वाला वो जुगाड़ में ही हायरिंग हो गई है, तो एक आदमी जिसका कॉम्प्रिहेंशन खराब है फिर भी हमने उसको हायर कर लिया। नाउ व्हेन आई एम बिल्डिंग माय एक्शन प्लान, अब तो मुझे एक्शन प्लान बनाना है, तो क्या करूं? हमको पता चल चुका है कि प्रोसेस नॉलेज खराब है क्योंकि ट्रेनर एसओपी नहीं पढ़ रहा है, तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? Trainer को warning मिलेगा like we should be go तो that or that. ट्रेनर का टेस्ट करिए, ट्रेनर disciplinary action like you are saying, understanding of SOP, disciplinary processes to be triggered if found not okay, etc etc, यही करेंगे ना? तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग प्रोसेस नॉलेज अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस नॉलेज मेरा वाइटल एक्स था, हमने उसका रूट कॉज ढूंढा, हमने उस रूट कॉज के भी ड्राइवर्स ढूंढे, अब इन ड्राइवर्स का हम एक्शन प्लान बनाने लगे, तो फाइनली होगा क्या कि आप प्रॉब्लम को जड़ से निपटाने लगोगे अगर ये एटीट्यूड से प्रोजेक्ट करोगे तो। आर यू गाइस विद मी एवरीवन? Yes. यस। तो जब आप एक बार 5Y बनाओगे, 5Y के बाद उन रूट कॉजेज उन ड्राइवर्स के अराउंड अपने एक्शन प्लान्स बिल्ड करोगे। एक्शन प्लान बिल्ड करने में दो चार चीजों का ध्यान रखना। कहां चले गए भाई? ध्यान दे लो। जस्ट वन सेकंड पड़ेगा, क्या हो रहा है ये?
छोड़िए 2.0 हमने कहा conduct 5y for all chosen factors। मैं फिर से लिख दे रहा हूं नॉन मैंडेटरी। Once you've done the 5y, we started building action plan। मेरा एडवाइस है दैट जब कभी भी एक्शन प्लान बिल्ड करने लगे, देयर आर सर्टेन थिंग्स, salient elements of action plan। कुछ चीजों का ध्यान रखिए। मेरे अनुसार एक चीज का ध्यान रखना चाहिए दैट यू शुड ऑलवेज try and break the activity into smaller elements, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भाषा में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करके देखते हैं। जो एक्शन प्लान बने हमेशा इंश्योर कीजिए दैट यू allocate roles and responsibilities। हमेशा टाइमलाइन डेफिनेशन क्लियर कीजिए। WHO में कह रहा था, so we are saying that this activity has to be done। trainer has to be tested on his understanding on SOP। ये काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ मुझे जरा। छोटे छोटे स्टेप्स में सोचो क्या करूं जिससे ये काम कंप्लीट हो जाए। पहला तो टेस्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? Correct. Create test for the assessment of the trainer। उस टेस्ट को कहीं होस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कोई टेक्नोलॉजी टूल में तो डालना पड़ेगा। यूज सम टेक टूल टू पब्लिश द टेस्ट। share the link etc with the concerned authority। राइट आंसर्स, पेपर कैसे चेक होगा उसका प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। एग्जाम इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो अब मैंने एक सिंपल एक्टिविटी ट्रेनर टू बी टेस्टेड के अराउंड 4 सब एक्टिविटीज बना दिया। आई एम सेइंग इसके अराउंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो कि ये करेगा कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट बनाने की। सो आई एम सेइंग ट्रेनिंग मैनेजर बनाएगा, टू बी अप्रूव्ड बाय क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। अगर ऑपरेशंस को इन्वॉल्व कर दूंगा तो जुगाड़ होने लगेगा, इसलिए मैंने क्लाइंट की गर्दन फंसाई। मेरे पास कोई टेक टीम है तो उस टेक टीम को मैंने बोला टेक टीम ये टेस्ट पब्लिश करेगी, लिंक शेयर करेगी टेक टीम। एग्जाम का इवैल्यूएशन का मेथड क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव की गर्दन फंसा दे रहा हूं कि वो चेक वो करे। So I have now broken down this one activity into smaller activities, and this is what is referred to in project management as work breakdown structure। Fair everyone? Yes. अब मैं इस एक्टिविटी के अराउंड टाइमलाइन डालना चाहता हूँ। सो मैं क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेनिंग मैनेजर से बात करके पूछूंगा कि मालक ये वाला काम कब तक कर दोगे। सो लेट्स से दे हैव अग्रीड दैट बाय द 20th of July they will do this। टेक टीम से पूछा, उन्होंने बोला 3 दिन में तैयार हो जाएगा, बोले 11th जुलाई को ये रेडी हो जाएगा। शेयर द लिंक एक्सेट्रा, उन्होंने बोला है 15 तारीख तक हो जाएगा।
whatever. So this is what I'm saying. Roles and responsibilities define करिए, timeline का definition दीजिए. हमेशा सोचिए how things can go wrong and try and bring mistake proofing, या लीन की भाषा में इसको पोकायोके बोलते हैं. मैं जब अभी ये टेस्ट के बारे में सोच रहा था, ये टेस्ट मुझे क्रिएट करना है, मुझे इसमें जुगाड़ की बदबू आई, इसीलिए मैंने एज अ मिस्टेक प्रूफिंग मैंने क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव की गर्दन फंसा दी है. कैन यू सी दिस? मेरे लिए मुझे ये डर लग रहा था. आई सॉ फेलियर मोड दैट दिस असेसमेंट कुड बिकम अ जोक, जैसा हमारी इंडस्ट्रीज में होता है. फिर जुगाड़ हो जाएगा. एक जुगाड़ हम हटाना चाहते थे, उसका आउटकम ये हुआ, एक दूसरा जुगाड़ हमने इन्वेंट कर दिया. उसको बचाने के लिए हमने क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव की गर्दन फंसाई है. द लाइकलीहुड ऑफ द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव नॉट डूइंग इट सीरियसली इज लेस. द लाइकलीहुड ऑफ द ट्रेनिंग टीम गिविंग a scope to the training manager is high. मैं इस पर्सपेक्टिव का हूं. अगर टेस्ट बनेगा पेपर पे तो बहुत भसड़ मच सकती है, मॉनिटरिंग गड़बड़ हो सकता है, बायस्ड हो सकता है. इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी टीम को इसमें इंक्लूड कर दिया और सॉफ्टवेयर लगाने की बात कर रहा हूं. उसमें क्या होगा कि ट्रेनर अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा, वो स्कोर कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता है. मेरे अनुसार ये मेरा मिस्टेक प्रूफिंग आइडिया है. मैं अपनी अपनी स्टोरी बताता हूँ. एआईजी में बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, वी डू देयर असेसमेंट. अगर पहले असेसमेंट कैसा होता था कि वो ट्रेनर हमारे सीनियर ट्रेनर्स को पढ़ाता था, सीनियर ट्रेनर साइन ऑफ देता था. फिर मैंने क्या देखा कि सीनियर ट्रेनर को ये समझ में आ रहा है कि इसकी नौकरी जा सकती है अगर ये असेसमेंट में पास नहीं करेगा तो जुगाड़ होने लगा. तुमको फीडबैक दे दिया, लेकिन तुमको साइन ऑफ नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी तुमको साइन ऑफ मिल गया. वो जुगाड़ को हमको किल करना है. तो हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कर दिया सारे ट्रेनर्स का, और हर टेस्ट से हर वीडियो से एसोसिएटेड टेस्ट बना दिया. और फाइनल इवैल्यूएशन अभी भी मैं ही करता हूं, जस्ट टू इंश्योर कि कोई जुगाड़ सिस्टम में ट्रेनिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट ना करे. यू गाइस विथ मी एवरीवन? यस सर. जब आप एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में लगे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा हाउ मे थिंग्स गो रॉन्ग. तो ये व्हाट इफ आपको सोचना पड़ेगा, और हमेशा कोशिश कीजिए उन व्हाट इफ्स के अराउंड कंट्रोल पॉइंट्स आप बिल्ड करें, क्योंकि लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी. जैसा आप सोचते हैं वैसा हो हमेशा जरूरी नहीं है. उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम ये है कि साहब हम पहले ही से सोच लें व्हाट में गो रॉन्ग, और हम अपने बिजनेस प्रोसेस में तरीके बनाएं जिससे ये ऐसे कंट्रोल्स हम बिल्ड कर पाए, मिस्टेक प्रूफिंग हम बिल्ड कर पाए. दैट इज व्हाट माय एडवाइस विल ऑलवेज बी अबाउट एक्शन प्लान्स. जहां मिस्टेक प्रूफिंग नहीं कर सकते हो वहां पे आप एटलीस्ट मिस्टेक सिग्नलिंग बिल्ड करो. बेटर अगर आप अर्ली वार्निंग सिग्नल बिल्ड कर सकते हो. आर यू गाइस विथ मी एवरीवन? अतुल, अभी तुम्हारी टीम में 25 नए बच्चे आए हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है. दे विल सब्सिक्वेंटली गेट ऑन द फ्लोर. अगर मुझे तुम 2 महीने बाद जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तब तुमको ट्रेनिंग टीम बताए कि आउट ऑफ द 200 पीपल और 100 पीपल और 20 पीपल दैट आर द न्यू ट्रेनिंग्स, उसमें से 5 ही हैं जो पास करेंगे,
तो ऑपरेशंस और क्वालिटी टीम्स अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम एक टेस्ट सिस्टम हर वीक बना लें और एक प्रोजेक्शन देना शुरू कर दें ऑपरेशंस को कि यू नो व्हाट, आउट ऑफ दीज 20 पीपल 17-18 से ज्यादा नहीं लगते हैं फ्लोर पे आने वाले, तो आपने जो ईडब्ल्यूएस दिया उससे बिजनेस प्रोसेसेस की लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। आर यू गाइस विथ मी एवरीवन? Yes. हमको एआईजी में अपना सेल्स मैनेज करने के लिए लगभग 300-325 लीड्स, कॉर्पोरेट सेल्स के लिए 300-325 लीड्स आती हैं हर महीने। तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दैट वी नीड अबाउट, लेट्स से द टारगेट इज 200, तो टारगेट 200 में 4 वीक होते हैं। हमने कहा अगर हर वीक 50 लीड नहीं आ रहा है तो गड़बड़ होगा। तो हमने ईडब्ल्यूएस अपना एस्टैब्लिश कर लिया है कि एनी वीक, लेट्स से वीक 1 ही 50 लीड नहीं आया, 25 आया, तो अगर चीजें नहीं सुधरी तो हम अपना टारगेट मिस कर जाएंगे। तो हमने एक ईडब्ल्यूएस अपने सिस्टम में सेट कर दिया है दैट अगर सिस्टम में 50 लीड से कम एंटर होता है तो वो एक अलार्म, वो एक ईमेल के साथ जिस जिस तरीके से हम जा रहे हैं हम अपनी ट्रेजेक्टरी मिस कर जाएंगे, हम अपना टारगेट मिस कर जाएंगे। दैट्स माय अर्ली वार्निंग सिग्नल, करेक्ट? तो जब कभी भी आप एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जब कभी भी एक्शन प्लान आप बनाने लगते हैं, इन छोटी छोटी चीजों के अराउंड सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सोचो क्या क्या गड़बड़ हो सकता है और उसके अराउंड कंट्रोल्स बिल्ड करो, बिकॉज जैसा हम सोचेंगे, हम ये सोच रहे हैं दैट मेरा जो भी ट्रेनर है वो ये एग्जाम देगा, थिंक ऑफ व्हाट मे गो रॉन्ग। अज्यूम करिए नया बैच आ गया, उसके पहले ट्रेनर ने अपना ट्रेनिंग अपना असेसमेंट नहीं दिया है, आएगा उधर से प्रोसेस का एवीपी वीपी बोलेगा भाड़ में गया टेस्ट, इस ट्रेनर को दे दो बैच, बैच स्टार्ट करने दो, बाद में कर लेंगे टेस्ट। क्या करोगे? We Processes can को, make sure that trainer give test only when there is a change in the process. लेकिन अभी तो सारे पुराने ट्रेनर्स हैं ही हमारे पास, उनका एक बार टेस्ट तो करा दूं। हाँ हाँ हाँ. तो आपको ये सोचना पड़ेगा। दैट्स माय हम्बल सबमिशन हियर। एनी क्वेश्चंस एनीवन सो फार? अतुल, भानु, अनस? No question. तो एक बार जब हमारा एक्शन प्लान बन गया तो ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप विल बी टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान। इम्प्लीमेंट करोगे तो होपफुली इम्प्लीमेंटेशन का आउटकम ये होगा कि एक्स इंप्रूव होगा जिससे वाई भी इंप्रूव होगा। तो होपफुली एक्स एंड वाई विल बोथ improve basis the implementation। तो हमको यहां क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना। और इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए तो हमको अपने गोल स्टेटमेंट से वैलिडेट करना पड़ेगा। And this validation has to be done statistically। मतलब if you remember your analyze phase of Six Sigma, आपने पढ़ा था कि अगर मीन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? अतुल, भानु, मानस, अदर्स?
One sample it is. वन सैंपल टी। मीडियन करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? One sample sign. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस का प्रोजेक्ट है फिर कौन सा टेस्ट करेंगे? वेरिएंस। अगर काउंट डेटा का प्रोजेक्ट है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? अगर प्रोपोर्शन का प्रोजेक्ट है लाइक क्वालिटी स्कोर, कौन प्रोपोर्शन टेस्ट? ध्यान रखिएगा गड़बड़ ना हो। So if you are doing a project on improvement of mean of something, वैलिडेट कैसे करें? बोले वन सैंपल टी टेस्ट है। अगर मीडियन इंडेक्स था, हैंडलिंग टाइम का मीडियन इंप्रूव करना है, वैलिडेट कैसे करें? बोले वन सैंपल साइंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस तो बहुत रेयरली इस्तेमाल होगा, बट अगर कर रहे हैं प्रोजेक्ट तो वन वेरिएंस टेस्ट। अगर काउंट का प्रोजेक्ट है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव योर पीपल हैंडल्ड, उसका गोल स्टेटमेंट बनाना है, उसका गोल वैलिडेशन करना है तो वन पॉइजन रेट। अगर परसेंटेज वाला कोई इंडेक्स है तो वन प्रोपोर्शन टेस्ट। अगर गोल अचीव हो गया, इफ गोल अचीव्ड, इंप्रूव खत्म। और कंट्रोल स्टार्ट हो गया। कंट्रोल फेज इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ इंप्रूव फेज। कंट्रोल फेज में लिटरली आपने जो कुछ किया है इंप्रूव फेज में वही कॉपी पेस्ट है इन अ न्यूअर टोन, और कुछ नहीं होता है। कंट्रोल इज एसेंशियली अबाउट sustaining the improvements that you've made. Improvement कैसे हुआ था? How did the improvements happen? Improvements happened because of the action plan. Everyone, यही था ना? Implementation of the action plan is what has yielded in the improvement. Correct, everyone? तो इसका मतलब वही अगर कंटिन्यू करना है तभी इंप्रूवमेंट सस्टेन्ड रहेगा। तो what was done, what was one time brilliance has to turn into process. मतलब same action plan. Ensure that action plan is continued. अब हम उस एक्शन प्लान का नाम बदल के, ये जो एक्शन प्लान था हमारा, इस एक्शन प्लान का नाम बदल के हम कंट्रोल प्लान बोलेंगे, लेकिन रहेगा सब कुछ सेम। In the improve phase, we built the action plan. So अब हम एक्शन प्लान का नाम बदल रहे हैं। हम इस एक्शन प्लान को एक्शन प्लान ना बोल के अब बोलेंगे कंट्रोल प्लान। और अब इंप्रूवमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, अब सस्टेनेंस के लिए कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आई एम नॉट डिलीटिंग इट, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द की वर्ड दैट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन इंप्रूव एंड कंट्रोल। सो हमको क्या करना है? हमको अब कंट्रोल प्लान बनाना है। तो जो एक्शन प्लान हमने बनाया था अब तक, उस एक्शन प्लान को हमको
continue with action plan. लोगों के KRA अपडेट कर दो, क्योंकि कल तक तो एक बार किया था तुमने. अब हम कह रहे हैं हर बार ट्रेनिंग मैनेजर को टेस्ट बनाना होगा, हर बार लोगों का टेस्ट लेना होगा. तो KRA अपडेट करो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपडेट करो, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन जो भी तुम बनाते हो वो अपडेट करो. तो ऑडिट स्टार्ट करो. पिछली बार व्हाट इफ अनऑर्गेनाइज तरीके से किया था, इस बार फेलियर मोड और उसके कंट्रोल्स मैंडेटरली इंप्लीमेंट करो. थॉट्स एनीवन? बेसिकली हम उसका वो KRA बना देंगे जो हमारा पहले इम्प्रूवमेंट में हमने यूज किया था एक्शन प्लान. करेक्ट. किसी न किसी के KRA में तो डालना पड़ेगा. अब नहीं डालेंगे KRA में तो लोग छोड़ देंगे. हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज से ट्रेनिंग का बदल गया कि पहले ट्रेनर का टेस्ट होगा, बाद में ट्रेनिंग का टेस्ट होगा. राइट ना? ऑडिट स्टार्ट करवाओ, कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन शुरू करो. और एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करना जरूरी है. तो create a lot of noise, create a lot of buzz around all the people who helped you make that improvement. तभी कंट्रोल क्रिएट होगा. और ये एक टूल के थ्रू करेंगे जिसको हम FMEA कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लान में. जहां कहीं भी पॉसिबल हो ऑटोमेशन देखो कर सकते हो कि नहीं. पोकायोके को या मिस्टेक प्रूफिंग को प्रेफरेंस दो. रिपोर्टिंग बहुत सारा स्टार्ट करो. सिंपल थॉट एवरीवन. यस. जब एक्शन प्लान बिल्ड किया था तो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया था. अब कंट्रोल प्लान को इंप्लीमेंट कर दो. जब एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया था तो इम्प्रूव्ड वाई में इंप्रूवमेंट आया था और हमने इम्प्रूव्ड वाई का डेटा गैदर किया था. तो अब एक बार डेटा कलेक्ट करने के बजाय कीप collecting data for your improved Y and access एग्जाम्पल सोचो. तो लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट था टू इंप्रूव वीकली हैंडलिंग टाइम. ठीक है. और हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कहा है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन एक रूल फॉलो करती है, DMAI इज इक्वल टू C. जितना टाइम डिफाइन से लेके इंप्रूव में लगा है उतना ही लंबा तुम्हारा कंट्रोल फेज होना चाहिए. Are you guys able to understand what I'm trying to say? Duration of defined to improve should be time for control phase. और अज्यूम करो तुम्हारा डिफाइन टू एनालाइज होने में 3 महीने लगा है, इसलिए इसका मतलब तुमको कितने दिन का डेटा कलेक्ट करना है? 3 महीने का. और हर वीक वैलिडेट करना है कि मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं. कीप कलेक्टिंग weekly
handling time data for 3 months. क्यों 3 months? Because हम ये assume कर रहे हैं DMAI has taken 3 months, इसलिए ठीक है। तो आपको डेटा 3 महीने का गैदर करना है और 3 महीने का डेटा गैदर करके हमेशा वैलिडेट करते रहना है। एक बार वैलिडेट नहीं करना है, कीप वैलिडेटिंग। if goal has been sustained, using the same set of tests that you were doing, सब कुछ ठीक है तो जो टाइम पीरियड है उसके बाद यू कैन पब्लिश कि प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुल। 2-3 चीजें आपको दोबारा करनी पड़ेगी। जिस तरह से मेजर फेज में एमएसए किया था, यहां आपको एमएसए दोबारा करना पड़ेगा और दोबारा आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और बिजनेस मांगेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। This should be published by finance team and not you. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस नहीं है तो फिर एज अ प्रोजेक्ट टीम ये आपका काम है, अदरवाइज ये आपका काम नहीं है। Can you put your email IDs in the chat please? मैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। Sure. Let's start from scratch. हम पहुंचे कहां? हम we have achieved our improvement. That is where control phase started. Control is only about sustaining the improvement that you made. And the school of thought that I come from, हमारे यहाँ एक रूल था DMAI is equal to C. कुछ businesses DMAI is equal to 2C भी करते थे, which meant जितना टाइम डिफाइन से इंप्रूव में लगा है कंट्रोल फेज उतना ही बड़ा होना चाहिए। जी मेडिकल साइंसेस DMAI इज इक्वल टू 2C करता था बिकॉज वो मेडिकल इंडस्ट्री है, उनके यहाँ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सो जितना ड्यूरेशन DMAI का लगा है उसका 2 गुना पीरियड आपको कंट्रोल करके देना होगा, सस्टेन करके देना होगा। ओनली देन विल द प्रोजेक्ट बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। यहां तक थॉट क्लियर है एवरीवन? Yes. And he said that because of the action plan, we've achieved our improvement. So sustain कैसे होगा? इसी एक्शन प्लान को हमको प्रोसेस बना देना होगा। जो वन टाइम अच्छा काम किया था, that has to turn into a process for us to be able to get sustainable results. तो प्रोसेस कैसे बनाए? बोले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपडेट करो, KRA अपडेट करो, अपना प्रोसेस, अपना काम करने का तरीका बदलो, नया सिस्टम जो डिजाइन आपने किया है उसको वेहीमेंटली फॉलो करो, ऑडिट करवाओ, रिवॉर्ड्स इशू करो, क्योंकि लोगों को आदत डालनी होगी इस नए काम करने के तरीके की। जहां तक पॉसिबल हो ऑटोमेशन करो। ऑटोमेशन से क्या होता है? इंसानी मशरूफियत खत्म हो जाती है। और एक टूल पढ़ेंगे FMEA, वेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो हमने एक्शन प्लान सोचा है, जो एक कंट्रोल प्लान सोचा है, वेयर कैन दैट गो रॉन्ग, और वो कंट्रोल्स हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मेरा डर अभी भी एक है कि हमने ट्रेनर का एग्जाम करवाया, व्हाट इज द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जुगाड़ करने लगे। ट्रेनर ने कुछ भी अनाप शनाप एग्जाम दे दिया है और उसकी टीम उसको पास कर दे रही है। कैन आई पास इट ऑन टू
Can I pass on the exam assessment to client or maybe the quality team? यही करना है. This is what you have to do. और बाकी तो सेम इंप्रूवमेंट. कंट्रोल प्लान बनाया, कंट्रोल प्लान को इम्प्लीमेंट किया, डेटा गैदर किया, और जो भी तुम्हारा CTQ था मंथली था, तो हर मंथ का डेटा से गोल स्टेटमेंट को कंपेयर करो. वीकली हैंडलिंग टाइम था तो वीकली डेटा से कंपेयर करो. तुमने कहा कि मैं क्वालिटी स्कोर मंथली क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर रहा हूं, तो भैया क्वालिटी स्कोर मंथली कैप्चर करो, गोल स्टेटमेंट से कंपेयर करो, अपने पोटेंशियल अपने एक्सेस को भी मॉनिटर करते जाओ. बात खत्म. दैट इज व्हाट इज इंप्रूव एंड कंट्रोल ऑल अबाउट. मानस, कितना समझ में आया? सर आई एम क्लियर. सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैं मान लीजिए मैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें सर क्या होता है कि कभी मैं सस्टेन तो कर रहा हूँ मेरा प्रोडक्टिविटी, जो भी मेरे जब डेटा मैंने कलेक्शन किया हुआ था तब मैंने जो जो फैक्टर्स मुझे मिले थे उसको मैंने इम्प्रूवमेंट कर दिया. अब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सम न्यू फैक्टर्स केम इनटू पिक्चर, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी दोबारा डाउन हो गया. तो उस केस में कंट्रोल, उस केस में फिर सारे स्टेप्स क्या मुझे दोबारा स्टार्ट करने? मुझे स्टैटिस्टिकली वैलिडेट करके तो दे देना कि कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से असर हो रहा है. अगर स्टैटिस्टिकली वैलिडेट कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा. अगर तुम नहीं तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो भसड़ हो जाएगी. सर मेरे डेटा जो मुझे ऐसे मैंने आई हैव टू कीप ऑन कलेक्टिंग द डेटा हर केस में, क्योंकि सर ये चीज एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली होती है. तो मैं जैसे अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और एक बात समझो, इनाम तो तभी मिलेगा जब तुम कंट्रोल कर पाओ. I'm also with you that the most important part of a Six Sigma project is the control phase. नहीं तो कितनी बार तो होता है कि हमारे इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंप्रूवमेंट हो जाता है. प्लीज रियलाइज when people realize that they are being monitored, तो इंप्रूवमेंट तो अपने आप झक मार के हो जाएगा. बट उसको सस्टेन अगर कर लिया कुछ टाइम तक, तो बहुत लाइकली है कि वो भसड़ दोबारा नहीं होगी. और सब जगह अब वही ढूंढ रहे हैं, चाहे आप 5Y का फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो, काइजन कर रहे हो. अभी मैं एशियन पेंट से लौटा हूँ, वहां का टॉप बॉस ने मुझे बस एक ही बात बोली है, बोले प्रणय 100 प्रॉब्लम फिक्स होते हैं, अगर उसमें से 15 भी ऐसे होना जो दोबारा ना हो तो मेरा लाइफ इजी हो जाए. इज नॉट सेइंग 100 आउट ऑफ 100 होना, तो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए कंट्रोल. कह रहा 15 भी हो जाए तो मेरा लाइफ इजी हो जाएगा. कंट्रोल इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फ्रॉम एनी प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव, चाहे वो सिक्स सिग्मा हो, लीन हो, काइजन हो, 5Y हो, किसी भी तरीके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है.